Moving on to the next question in the series of GATE 2025 electronic solutions from the subject engineering mathematics. The next question is of 2 marks MCQ type from the 2 marks MSQ type from the topic or chapter derivatives in calculus, differential calculus. Question number 43 in the master question for GATE 2024 electrical engineering from subject engineering maths is as follows. Question number 43. MSQ also. Let f of x, f of t, sorry, be a real valued function whose second derivative is positive. Second derivative is positive for range of t is given as minus infinity to infinity. This for all t, all real values of t. ठीक है? यहाँ पूछा है which of the statements following statements is or are always true and always true. Options कुछ इस प्रकार दिया हुआ है. Option A, f of t has at least one local minimum. Option B, f of t cannot have two distinct local minimum. Distinct local minimum. A minimum. Because it is plural. Now question option number C is f of t has at least one local maximum. At least one local maximum. And option D is the minimum value of ft cannot be negative. F of t, the minimum value of f of t cannot be negative. Basically, this is the question on real value function if f of t is given whose second derivative is positive for all real values of t, that is minus infinity to infinity, and then which of the following statements are always true. F of t has at least one local minimum. F of t cannot have two distinct local minima. F of t has at least one local maximum. The minimum value of f of t cannot be negative. Let's move to solution. So it's an analytical question. It's kind of analytical question based on second derivative of a real valued function. Four options are here. We have to verify which of the statements are true or is or are true. Always true. Now for f of t it is in second derivative. Second derivative, that is we have double prime t or d2 f of t dt2, it is given is always for all t. That is minus infinity to infinity. That is the slope of f of t, that is dft by dt or f dash t. This function is always increasing. That is the derivative of this function, which is this function, is always greater than 0. That is
the slope of, you can say that the slope of f of t is ever increasing. Is ever increasing or monotonically increasing. Monotonically increasing. Right. You say this. Now we can solve this example with a very relevant illustration or say assumption और एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख सकते हैं, पैराबोलिक फंक्शन लिख सकते हैं जिसका कुछ इस प्रकार एफ ऑफ टी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, इस तरह कोई फंक्शन लिख सकते हैं जिसमें ए अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो ये कॉन्केव अपवर्ड होता है और ये वाला कंडीशन हमें सेटिस्फाई करता है, क्योंकि इसमें डी टू डी टू क्या है, एफ डबल प्राइम टी क्या है, इसमें 2a simply you differentiate this twice you get 2a, so a is greater than 0, 2a is greater than 0, so the function will look like something like this. This is general representation, general है, अब ये डिपेंड करेगा y इंटरसेप्ट और बाकी पॉइंट्स a b और c के वैल्यूज पे to depend basically. This is generalized illustration or representation of f of t. Now let's check the options one by one. Check कर सकते हैं. f of t is at least one lower minimum. At least one lower minimum. At least तो नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें वन ही लोअर मिनिमम होगा, राइट. लोकल मिनिमम वाले हमें की कंडीशंस क्या होना चाहिए, f dash t equal to 0 and f double dash t greater than 0. Now second condition is satisfied, right, for all t. फर्स्ट कंडीशन जब भी सेटिस्फाई होगा, जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई होगा तो इस लोकल मिनिमम बन जाएगा, राइट. लेकिन ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो ये ऐसे दिखाया इलस्ट्रेशन के लिए, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश टी तो बढ़ता रहे लेकिन एफ ऑफ टी एफ डबल डैश टी तो ग्रेटर देन 0 हो, लेकिन एफ डैश टी भी कभी वो भी शुरू से ग्रेटर देन 0 हो. मे बी समथिंग लाइक दिस. इफ यू टेक दिस एग्जांपल, दिस इज वन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल इफ यू टेक लाइक दिस. सी टू द पावर 80 a e to the power bt, right? A and b are greater than 0. Then what we get, f dash t here, f dash t हम लोग मिल जाता है a b to the power bt is greater than 0, and also f double dash t is a b square to the power bt is also greater than 0. So this condition is satisfied, and also this is also greater than 0. For local minimum you need this condition. This is not satisfied, this is not equal to 0, greater than 0 for all real values of t. तो ये ना हम लोग नहीं बोल सकते जनरलाइज्ड, at least one lower minimum may or may not have. For this function, say f of t is this function, it has no local minimum, whereas this condition satisfied, the condition d2 the second derivative is positive for all real values of t. स्लोप बढ़ते ही जा रहा है, इसको हम नहीं बोल सकते. नेक्स्ट चेक करते हैं ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन बी, f of t cannot have two distinct local minima. टू डिस्टिंक्ट लोकल मिनिमा होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा. ये जो इक्वेशंस है सेटिस्फाइड दो बार, टू टाइम्स इट हैज टू सेटिस्फाइड इन द रेंज
that is this. All real numbers of t in this range, t belonging to this range, these equations have to satisfy twice. Now f double dash t is greater than 0, that is f dash t is increasing, monotonically increasing. So if f dash t, f dash minus infinity, f dash minus infinity, whereas f dash minus infinity is less than 0, in that case what will happen? F dash t, f double dash t greater than 0, तो f dash t क्या होगा? माइनस मतलब नेगेटिव कोई वैल्यू लेस देन 0 से इंक्रीज करते करते मतलब करता रहेगा, इन्फिनिटी जाएगा, मतलब it will say something like this. Let's say कहीं पे जीरो को टच करेगा, ऐसा कुछ. तो but how many points at how many values of t can it become equal to 0? एक ही पॉइंट पे करेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो माइनस इन्फिनिटी से बढ़ते 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 या नेगेटिव कोई वैल्यू से बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तरफ जाएगा, लेकिन जीरो कितना बार होगा? एक ही बार, वन टाइम इट कैन बिकम जीरो, ओनली वंस. सो दिस इक्वेशन will satisfy only once if f dash minus infinity is less than 0. Now if you take f dash infinity is greater than 0, f dash minus infinity is greater than 0, so basically we start from some positive value of f dash infinity, start from some positive value. So then also as f dash t, f double dash t is greater than 0 for all real values of t, this will keep on increasing, बढ़ता ही रहेगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू से इन्फिनिटी तक जाएगा. तो ये रियल एक्सेस, आई मीन एक्सेस को कट करेगा नहीं, मतलब f dash t इक्वल टू 0 ये इक्वेशन पे एक भी रूट नहीं होगा, कोई किसी भी वैल्यू ऑफ t पे सेटिस्फाई होगा नहीं. तो इस केस में हम लोग आ रहे हैं 0 मिनिमम, और इस केस में हम लोग कितना आ रहा है? 1 मिनिमम, ऐसे मैंने पहले लिखा है. नीचे स्टार्ट हो रहा था तो एक बार कट कर रहा था, इसमें ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हो रहा है तो इन्फिनिटी तक बढ़ते जा रहा है, तो जीरो को भी टच करेगा ही नहीं, क्योंकि पहले से जीरो से ज़्यादा है. सो देयर आर नो रूट्स ऑफ f dash t equal to 0 और if f dash minus infinity is greater than 0, if dash minus infinity is less than 0, then if dash t equal to 0, one root. So in either case we can see that it has at most one root. One root means one local minimum, because if f dash t has a root and as it is given that second derivative is always positive, so this is already satisfied. ये इसका अगर एक रूट हो जाता है तो मतलब जितना रूट होगा उतना लोकल मिनिमम होगा. इस केस में एक रूट हो रहा है तो एक लोकल मिनिमम, इस केस में जीरो रूट, सो नो लोकल मिनिमम. सो this statement what we can modify and write it as not at least, it should be at most. At most, that is 0 or 1, 0 in this case and 1 in this, 0 in this case and 1 in this case, 0 in this case and 1 in this case. ठीक है? So cannot have two distinct local minimum, that is true. At most you will have one, 0 or 1. This statement is true. It cannot have two distinct local minimum. At least one local maximum. Condition for local maximum is what? Let me write. Local maximum condition is what? F dash t equal to 0. This condition is same, common, but f dash double dash t is less than 0. And in the question, in the statement itself, it is given second derivative is always positive for all real values of t. तो f dash equal to 0 तो होना चाहिए, उसके साथ f double dash less than 0 होना पड़ेगा, लेकिन वो कभी हो ही नहीं सकता क्वेश्चन के हिसाब से मुताबिक. ठीक है? तो दिस it the function can't have any real local maximum, because f double dash is always positive, it cannot be negative for local maxima to exist, right? Maxima to exist, f double dash has to be less than 0. So this is not satisfied. It has no local minimum. I am writing what should be the actual thing, means what is actually what actually applies to f of t. ये मैं लिख लेगा कि एक्चुअल में हो रहा है f of t has at most one local minimum, 0 or 1, cannot have two distinct local minimum. f of t has no local maximum, as I explained, जैसे मैंने बताया, और minimum value of f of t cannot be negative. क्यों भाई? ये तो हो सकता है, मैंने बोला f of t can be anything, right? मिनिमम को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी हो सकता है.
जैसे इस केस में पैराबोला केस में हम लोग मान लेते हैं मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो मिनिमम पॉइंट है वो ऐसे ना होकर ऐसे भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू ये नेगेटिव हो गया। वाई कैन नॉट नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी एनीथिंग। इस केस में भी अगर कुछ और कॉन्स्टेंट्स आ जाए तो इन दैट केस से -2 है कुछ आ जाए तो उस समय क्या हो जाएगा, एक शिफ्ट हो जाए डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होगा। लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज जो एफ ऑफ एफ डैश टी और एफ डबल डैश टी का वो सेम ही रहेगा। बस तो स्टार्टिंग जो पॉइंट है मिनिमम वैल्यू जो है वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इफ मिनिमम वैल्यू एफ टी कैन बी नेगेटिव, it should be the correct thing, correct option answer. I mean correct statement is the minimum value of ft can be negative if of t has no local maximum, if of t cannot have two distinct local minima, and if of t has at most one local minima, as I explained. So the correct answer, option that corresponds to the correct answer for this question is option B, as I explained. This is the basic properties of second derivative and first derivative of a real value function f of t. I hope the solution is clear and very well explained, so that the viewers could understand each and every point. If you have still have any doubts or queries, please feel free to ask in the comments. And that's all for this question.